हेलो शिवानी विशिष्ट, आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया मनका एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आई जस्ट वांट टू टेक योर फीडबैक दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट डिड यू लर्न एंड हाउ डू यू फील आफ्टर बिकमिंग a good Vedic numerologist. Thank you so much, ma'am, first of all, for arranging this course at this time. I know after my delivery, I thought कि मुझे अपना Chaldean के बाद Vedic भी सीखना है. So I was very much keen and enthusiastic at the same time that I really want to learn this numerology because it just not tells you about one side of aspect. It tells you about everything. And numbers play such a vital role in our lives. I think thanks to you for introducing it to us. हमें बताने के लिए कि एक एक नंबर की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारे टाइम एवरीथिंग शोज अ लॉट अबाउट एन इंडिविजुअल एंड हमें लगता था कि वी आर ओनली गवर्न बाय जस्ट आर डेट और द डे वी आर बोर्न बट देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स जो आपने हमें बताया इसके वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू एंड मैम इट लिटरली opens so much of horizon for us and it gives us so many opportunities कि हम अब किसी को भी देख के बता सकते हैं कि उसकी एटलीस्ट बेसिक पर्सनालिटी क्या है even if we don't know the time but we can still analyze the personality of the person. We can know how the person is, what is it something that we can do, and especially ma'am thanks to the remedies that you have provided to us because they are so easy and it is very inexpensive. In today's world we see so many astrologers, numerologists, they tell us so many things कि आप यहाँ चले जाओ ऐसे कर लो, which is very expensive at times and हर कोई normal बंदा नहीं afford कर सकता. So I think that is one of the thing which I felt personally कि it is very easy to learn provided you're very dedicated and if you have that thing because आपके अंदर zeal है, you are one person who has always motivated each one of us to be there on time and thanks to you for showing that sort of punctuality and dedication and equal determination and faith in your students. Definitely, and that has really helped us to come up to that phase that we can be proudly saying that we are your students and Thank we you. are so happy to share that this bond with you because you have actually had that trust in us and you always made sure that any topic whether it's small big you are never hesitant to repeat that again and again चाहे वो हमारा छोटा सा एक छोटा टॉपिक हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो बिकॉज एज अ स्टूडेंट एनीबडी कैन हैव डाउट्स एट एनी पॉइंट इन टाइम और वो किस माइंडसेट से आ रहा है उसको रीड करके आपने कभी जज नहीं किया किसी को एंड दैट्स अ वेरी वेरी big blessing and for me I think I'm very happy and fortunate that after my delivery 6 months हो गए and मैं ये सीख पा रही हूँ so it's a big thing for me and anything in future मैं तो I'm even happy to assist you whenever I get an opportunity and ma'am I would also like to share one more thing that this course has really highlighted I mean, various numbers. I mean, we know numbers are everywhere around us, but उनकी हमारी presence क्या है, उसका astrological benefit क्या है, उसको relate करके आपने इतनी I'll say बहुत ही बड़ी चीज को ना आपने एक बहुत अच्छे तरीके से concrete and symmetrical way में हमें बहुत अच्छे से समझाया है, which is very essential for each one of us because anything that you've shown us in astrology is very complex at times for people to understand and जो आपने छोटी छोटी चीजों का उसका रिलेट करके सबसे अच्छी बात है माइथोलॉजिकल रिलेशन आपने करके बताया दैट्स एक्सीलेंट so thank you so much ma'am and thank you Poonam ji and Sarita ji for being a part of it because of your questions I think आप लोगों के अच्छे डाउट्स क्वेश्चंस की वजह से we were also able to learn so many things so thank you so much Malvika ma'am Thank and you we so much. are always your student we would like to be your student we would love to assist you as well whenever possible and we would like to continue our journey with you forever. So thank you. So sweet of you. Thank you so much. Exactly. Thank you. Thank you so much, Shivani. Thank you so much. And in fact, I would like to thank all my teachers, all my gurus, जिनसे भी मेरे को सीखने को मिला. So whatever knowledge I have learned, it is उनका efforts या उनकी learnings और of course अपने work करके जो आपके सामने present किया, this is their thing जो I have passed on. And of course improvisation हर चीज के अंदर जरूरी होता है, which I tried. So एज अ स्टूडेंट वट एवर आई फेल्ट कि मेरी लाइफ में जो चीजें मिस्टेक हुई थी या जो चीजें मेरे को नहीं मिली, आई अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स और उसी बेसिस को लेके अपने स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट मेरे को लेके चलना पड़ा. तो दिस इज समथिंग आई थिंक
ज्यादा कनेक्शन इसकी वजह से ज्यादा स्ट्रांग हुआ. सो थैंक यू सो मच टू यू शिवानी.